सही है। ये ये तो हमने एग्री कर लिया है कि यहां इसी सूरत पे आएगा कि अब द नंबर इज पॉजिटिव। या सॉरी, ऑटो फिल जो है ना। So now we said, okay, let's run a loop n times, start off from 0, go up to n, and keep adding it to a variable sum. तो वो हमने ये किया कि we have started off from 0, we check the condition कि while I is less than n, इसका मतलब है ये मेरा जो loop है ये n दफा चलेगा। अगर 5 एंटर करेंगे तो 5 दफा चलेगा, 10 एंटर करेंगे तो 10 दफा चलेगा, and every time I say sum is equal to sum plus I. And now, when I get out of this loop, my variable sum should have the value that I want to print out. So I'm going to say cout sum. And this should work. There is a mistake in this code, but abhi tak koi cheez samajh nahi aayi, to please ask a question. Oh yeah, Hamad, you're right. It's less than or equal to, but I was thinking कि ये बाद में बताएंगे। लेकिन essentially हमने क्या किया, हमने if से चेक किया कि नंबर पॉजिटिव है, फिर इधर आके हमने लूप लगाया और हमारा लूप n दफा चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट विल गो ऑल द वे टू n। पहली दफा 0 ऐड करेगा सम में, फिर 1 ऐड करेगा, फिर 2 ऐड करेगा, फिर 3 ऐड करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक I इज नॉट लेस देन और इक्वल टू n। सो हमने 5 एंटर करके देखते हैं। If we enter 5, the answer should be 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 should be 15. So हम 5 enter करेंगे तो उसने 15 enter कर दिया। तो we just logically checked our code for one use case. So what if we enter -1? When we enter -1, it's going to say it should be a positive number, and it's not. ठीक है? Now this is an example। हमने इसके अंदर दो चीजें की हैं। हमने क्या किया है कि हमने एक while लूप बनाया है जो कि n दफा रन करता है। हमने if else से कंडीशन चेक की है। सो लेकिन देखिए, अब मैं इसके अंदर -1 करता हूं तो वो कहेगा it has to be a positive number। So this code only runs when there is a positive number, and I'm actually able to, so let's say if I give 10, it'll give me the sum 55, because उसने पहले क्या किया, पहले वो 0 ऐड करेगा सम में, फिर 1 ऐड करेगा, फिर 2 ऐड करेगा, फिर 3 ऐड, जो मेरा लूप का काउंटर है वो हर दफा उस काउंटर को सम में ऐड करता जाएगा, बिकॉज दैट्स द बॉडी ऑफ द लूप। सो दिस बाय द वे इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। ये जो लाइन 25, 26, 27 है and 28, this is the body of the loop, and this loop will run n times, n plus 1 actually, starting from 0, and it's going to go all the way to n. And this is my algorithm. So you remember हमने ये कहा था कि once you have this pseudocode, translating it into this code should be relatively straightforward. अगर ये मैं if वाला part निकाल दूं तो essentially this is my code, and this is very similar to my pseudocode. अब देखिए step 5 है sum is equal to sum plus I is equal to I plus 1, and I'm repeating this n times. So it's exactly the same as the pseudocode that we wrote, and you can test it out. I would actually advise you to not look at this code, just look at this, or even better, look at this and see if you can write this program, because if you can write this basic loop, you will get a few things. You will be able to initialize the loop ka variable, you will be able to write the body of the loop, you will be able to increment the loop, and you will be able to test out if key conditions. So now, so let's say if you wanted to, let's say the question was if enter a positive number less than 10. Okay? So how would that change? What line would I need to make this change? Now the program says, I want you to enter a positive number less than 10. जी मोमिन। सर ये जो पहली वाली हमारी इफ कंडीशन है इसमें हम एंड डाल के तो इसको n लेस देन 10 कर देंगे। लेस देन और और इक्वल टू। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था इसमें। जी जी, बताएं। सर इस केस में अगर आपने जो कोड लिखा हुआ है इसमें तो ये है ना कि अगर हम नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं तो कोड एंड हो जाएगा ना उस पे, तो जी जी वो जी बिल्कुल। प्रिंट आउट कर देगा। तो मतलब हम वो किस तरह कर सकते हैं कि मतलब अगर इनपुट लेस देन वो आया है तो ये हमारा कोड हमें दोबारा रन ना करना पड़े, ये हमें बता दे कि हमने इनपुट हमारा गलत है लेकिन वो दोबारा उसी कोड में हमसे इनपुट ले ले। Okay, so
Uh, it's very possible. And the way to do this is something that's actually part of your assignment. लेकिन essentially हम करेंगे क्या? ये वाला जो input part है ना, this needs to be in the loop. एक दफा तो input हमने ले लिया, लेकिन जी inside the body of the loop, inside this if-else condition, I will need to do the loop again. So मैं actually so essentially आप करेंगे क्या कि if the condition is not true, rather than saying see out positive number नहीं है you idiot, you essentially are going to say get another input and go back to line 18. Essentially words to this effect. आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन आपको इसका मतलब यह है कि अगर उसने इनपुट करेक्ट दिया था और हमने कर भी सारा कुछ सही दिया है, तो देन यू नीड टू ब्रेक आउट ऑफ इट, राइट? वो अभी हमने किया नहीं है, लेकिन essentially the idea would be कि you would break here कि अच्छा if the input was correct and you collected the right sum, then break out of it. We break essentially means कि stop the loop and go out. एंड सो वो मैं फिलहाल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बता सकता हूं, लेकिन आपके कुछ क्लास फेलोज परेशान हो जाएंगे. लेकिन essentially what we are saying is कि we will put all of this inside a loop, an infinite loop actually, and what we are saying is keep on doing this unless, so मैं आपको जरा इसको इंडेंट करके दिखा दूं, लेकिन ये मेरी इंटेंशन नहीं थी करने की, जबरदस्ती कर रहा हूं मैं. लेकिन if the number is correct, do everything fine, and so ये अगर हम रन करके देखते हैं, अब एक सेकेंड. So if the number is correct, it will come here, it will do everything, it will calculate this, and then it will break out and it will go to line 37. Again, if it's not true, I will need to get the input again and I will continue doing this. So essentially this would be it. ये सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने अब सवाल पूछ लिया था, इसलिए मैं आई डिडंट वांट टू साउंड के जैसे मुझे आंसर करने में कोई मसला है. सो ठीक है. सो अब वो क्या करेगा? नाउ लेट्स लुक एट द लॉजिक ऑफ द कोड. उसने इनपुट लिया, उसके बाद वो व्हाइल लूप में आ गया, फिर आके चेक करेगा इफ द इनपुट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब इनपुट ठीक है. तो वो इधर आएगा, ये लूप चलाएगा, सम प्रिंट करेगा, इट विल ब्रेक आउट, इट विल गो अवे. Otherwise, if the number is not correct, it will say number is not correct, give me another input, and it will keep on running. So now, if I say if I say 5 is going to give me 15, that's how it's supposed to. But if I say -1, it will say it's not a positive number, enter the number again, and जब तक मैं सही number नहीं दूंगा तब तक वो चलाता रहेगा. But this is just for the sake of completion. Please don't get. If we don't use break, it will keep on. So if I don't have this, so that's a problem because it will now enter a positive number less than 10. मैंने 5 enter किया, वो आके sum print करेगा और वो उसी को बार बार print करता जाएगा, क्योंकि अब उसने number n दे दिया है. It will keep on doing this over and over and over and over again, and it will keep on printing sum. ठीक है, क्योंकि हर दफा वो आएगा, n की कंडीशन चेक करेगा, आई को 0 करेगा, तो वो एक ही सम को बार बार रिपीट करी जाएगा. सो आई नीड टू टेल हिम टू ब्रेक आउट ऑफ इट व्हेन इट हैज डन इट राइट द फर्स्ट टाइम. लेकिन मैं ब्रेक बात करना नहीं चाहता था, वो क्योंकि क्वेश्चन आ गया सर, इसके जवाब. जी तो मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि i इज लेस देन और इक्वल टू n है, तो जब n से ग्रेटर हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली रुकना चाहिए, पर बार बार क्यों करी जा रहा है? फ्रॉम द स्टार्ट क्यों जा रहा नहीं, है? देखो, n की वैल्यू तो चेंज ही कहीं नहीं हो रही ना. n अगर मैं ये ब्रेक नहीं डालता, तो look at this, is the value of n being changed anywhere? नहीं, उधर कांस्टेंट है. हाँ, तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एवरी टाइम आई रन दिस लूप अगेन, मैं i को दोबारा 0 कर देता हूं, तो i की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे जाती है, फिर 0 हो जाती है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 0 हो जाती है. इट विल कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि n तो कभी चेंज हो ही नहीं रहा. दिस कंडीशन विल कंटिन्यू फॉरएवर. ठीक हो गया, वो आपने इनपुट दे दिया, n पॉजिटिव हो गया,
0 हाँ और 10 के बीच में, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पर बार बार रिपीट करता जाएगा 10 वही हो आएगा गया। और इस पे वो आएगा ही नहीं, इस पे वो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो ऊपर वाली कंडीशन मीट हो रही है, इसका मतलब एल्स वाले पार्ट पे जाएगा नहीं, दोबारा एन मांगेगा ही नहीं आपसे। तो आपने जो एक दफा एन दिया था उसी को रिपीट करी जाएगा वो। सो द पॉइंट इज कि ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कंप्लीशन के लिए दिस इज एक्चुअली अ गुड सॉर्ट ऑफ वो। लेकिन फिलहाल इसको इग्नोर करें, एज लॉन्ग एज यू कैन राइट दिस पार्ट फॉर नाउ, दिस शुड बी ओके। क्योंकि अभी हमने क्या किया, हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट डाला और हमने कह दिया कि अगर नंबर सही नहीं है तो उसको प्रिंट कर दो कि भाई ये एरर है, सही। एंड हम इवेंचुअली असाइनमेंट में क्या करेंगे कि जो हमने इन्फिनिट लूप बनाया है टू मेक श्योर कि यूजर इज एंटरिंग Hassan, I plus plus means I is equal to I plus 1, like Hamza said. You're either asleep or you're just waking up every 5 minutes or so, because we've talked about this. We've said that this is exactly equal to I is equal to I plus 1, and that's exactly equal to I plus, plus equal to 1. These are equivalent. This one, and this one are exactly the same. They mean the same thing. It's just shorthand, easier to write, and perhaps easier to understand as well. Okay, we wrote our first program using loops, and now, acha, let's stop for 5 minutes. It is 2:56. Let's stop for 10 minutes, and let's. If you have any questions, इस वक्त हुए हैं 2:56. I'm going to go get coffee, and then we'll start off at 3:05. I will leave the code open. Although I would still expect you to write the code yourself. Sir, can we start at 3:10? We can start at 3:10, absolutely. Gives me more time. Yeah, so this is the code, and what I would do is I would not look at it. So ignore the, क्या करें अगर आप लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना, इस पार्ट को इग्नोर करें. If assume it's a positive number, and write this code. Essentially हमने क्या किया है, हमने एक लूप लिखा है जिसके अंदर हम एक नंबर ले रहे हैं और we are summing it up and we are printing it. Write this code without looking at this slide. And I think let's assume positive है, positive वाला पार्ट हम बाद में कर लेंगे, लेकिन essentially ये इतना पार्ट अगर आप लिख लेते हैं ना, तो at least we can start discussing one or two more examples after. So now we're entering a positive one. Assume कि it's a positive number less than 10 and 5 enter करूँगा तो ये कोड अगर आप बगैर देखे लिख सकते हैं ना, so I think you're good for now. ठीक है जी सुभान, there was a question. जी सुभान, if you want to share your program or copy paste your program, I can look at it. Yes sir, I'll share my program. Copy paste कर लें, बेहतर होगा, वरना I'll have to stop sharing the screen for others. Okay sir. Your hand is raised, by the way, Subhan. Yes sir, Okay. I'll paste. Gigi, got it. If n is greater than 0 int I, while I is less than it should work. Is there something wrong? It's not giving the right answer? No sir, it is not answering. Where are you printing the answer? Sir, in GDP online. Sorry? ना अपने कोड को देखें. आप जो सम है वो वेरिएबल सम में ऐड कर रहे हैं, राइट? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. Yes sir. Where are you printing sum? Sir, I couldn't get it right. You're not printing the value of sum at any point. आप कैलकुलेट तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन you're not printing it to the screen.
आप सी आउट तो कर ही नहीं रहे, सी आउट सम करेंगे Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. एंट्री कर Thank you. देगा। Thank you, sir. Okay, sir. जी सुमरेज शेयर योर कोड या कॉपी पेस्ट।